बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाला चौधरी। नज़र डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट पर। क्रिप्टो करेंसी की दीवानगी, मुनाफे की दौड़ या ख़तरे का सफ़र, माहिरीन ने ख़बरदार कर दिया। अमेरिकन कम्युनिटी मीडिया के ज़ेर एहतमाम जुम्मा 13 जून को एक कौमी मीडिया ब्रीफिंग का इनेकाद हुआ, जिसका उन्वान था क्रिप्टो करेंसी की वापसी, बड़े मुनाफे, ख़तरात और फ्रॉड। इस ब्रीफिंग में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन ने क्रिप्टो करेंसी के मौक़े और ख़तरात पर गुफ्तगू की। माहिरीन ने ख़बरदार किया कि अगरचा क्रिप्टो नए माली मौक़े फराहम कर रहा है, लेकिन उसके साथ बड़े ख़दशात भी जुड़े हैं। टायरॉन रॉस जूनियर, CEO और शरीक बानी टनकी लैब्स ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी महरूम तबकात को माली खुद मुख्तारी देने पर मददगार साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर उन कम्युनिटीज़ के लिए जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर रही हैं। कैंट्रल डुमास बेटर मार्केट्स के डायरेक्टर्स ने कहा कि क्रिप्टो मार्केट में ज़ाब्ताकारी की कमी, कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव और ख़तरनाक तिजारती मुआहदे माली निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलिज़ाबेथ कॉक, FTI कंसल्टिंग की मैनेजिंग डायरेक्टर और साबिक फेडरल ट्रेड कमीशन तफ्तीशकार ने बताया कि क्रिप्टो से मुताल्लिक धोखाधड़ी के केसेस में इजाफा हो रहा है। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी और रेगुलेटरी निगरानी की अशद ज़रूरत पर जोर दिया। ज़ीक फॉक ब्लूमबर्ग न्यूज़ के तहकीकी सहाफ़ी ने मशहूर शख्सियात की तरफ से किए गए मुश्तबे क्रिप्टो प्रमोशंस और इखलाकी मसाइल को उजागर किया। उन्होंने बताया कि बाज़ मामलात में सदारती ख़ानदान के अफराद भी इनमें शामिल रहे हैं। माहिरीन ने बिटकॉइन माइनिंग से माहौलियाती तबाही, ट्रंप की हुकूमत की क्रिप्टो पॉलिसी और गैर मुल्की सरमायाकारी के ख़तरात पर भी रोशनी डाली। इख्तिताम पर तमाम माहिरीन ने इत्तफ़ाक़ किया कि क्रिप्टो में सरमायाकारी करते वक्त आवाम को होशियार रहने, मुकम्मल मालूमात हासिल करने और कवानीन की सख्ती से पाबंदी की ज़रूरत है। Okay. All right, Sandy. See you Yeah, later. great. Okay. All right. Good morning. Good Friday, everyone. Welcome to today's American Community Media Weekly National Briefing. I'm Pilar Marrero, your moderator for today and co-producer of our weekly Friday briefings with my colleague Sunita Sorachi. I'm going to use crypto assets. I think the original sin of crypto is that they were called cryptocurrencies. Presentation, very easy to follow. Okay, Sunita, why don't you ask your question about the remittances? I'm not sure. Yeah, Mr. Ross, you had just mentioned remittances as a means, using Bitcoin as a means for sending dollars back home to the home country, remittances. Salt. Mr. Dumas? Please go Yes. ahead. Good afternoon, everyone. I appreciate the opportunity to contribute to this important conversation. My name is Cantrell Dumas, and I serve as Director of Derivatives Policy at Better Markets. Today, I'll provide a brief overview of a fact sheet we published on the intersection between cryptocurrency and minority communities. The fact sheet draws on existing research and public data to help inform how crypto is being marketed, adopted, and experienced in these communities, and to highlight where greater attention may be needed from policymakers and regulators. Let me start with a broader narrative. Cryptocurrency has been widely promoted as a tool for financial inclusion. The big, beautiful spending package. Can you speak to which direction the government is headed and how you think it might change the conversation around crypto and its relative safety for users? Thank you. Yeah, okay. Well, thank you so much, Mr. Dumas. Please stay around. We move now to Elizabeth Kwok, who will talk about best practices for consumers, among other issues. Elizabeth, please go ahead. Hi, everybody. Happy Friday. As Pilar mentioned, I'm here to talk about just a brief overview of the types of uses in crypto that have become prevalent, as well as she mentioned, best practices for avoiding scams in the space. Some of the information has been touched upon by the two previous panelists, but I will share just a couple of tips and things like that
I've also dropped a couple of resources into the chat from the FTC, which is where I spent about 12 years up until the end of 2024. Of cryptocurrencies, and also what effect do any of you think the rising use of cryptocurrencies will have on the value and the widespread use of traditional currencies? That has been mentioned a couple of times about what President Trump and his family are doing with crypto. Zeke? Hi, everybody. Thanks Hey. for having me. Oh, thank you. So, President Trump, during his first term in office, was no fan of cryptocurrency. And he, in one interview, he called Bitcoin a scam against the dollar. And he said that cryptocurrency valuations were made up out of thin air. And that obviously changed. And what happened was actually the result of a concerted lobbying effort. देसी उर्दू टीवी से फिलहाल कितना ही. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.